आप लोगों को एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आई होप यू गाइस हैविंग रियली ग्रेट डे, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग ए न्यू जर्नी गाइस, राइट? तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मतलब मैं वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाटएवर एंड ऑल। सो या आई एम गोइंग एक अलग जगह पे। मेरा जो भुवनेश्वर का जर्नी है वो यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। सो it's been a long day, right? It's been already 5 years I'm staying over here, and बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस जर्नी में मुझे शेयर करनी है। तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको बहुत सारी चीज़ मैं शेयर करूँगा इस जर्नी में, राइट? तो शुरू करते हैं, राइट? बहुत सारे दोस्त बने थे यहाँ पर मेरा। आई थिंक मैं जब से मेरा 12th ख़त्म हुआ था, मैं ये तब से ही मैं यहाँ पर भुवनेश्वर में आ गया था मेरा स्टडी कंप्लीट करने। और मैं कुछ मेरे दोस्तों से कुछ अलग ही कर रहा था, समथिंग डिफरेंट, यू नो। सो जितने लोगों को नहीं पता, मेरे दोस्तों को तो पता ही होगा ऑब्वियसली इस बारे में, तो जितने लोगों को नहीं पता, आई एम ए हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट, राइट? मैं एक हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट हूँ। तो मैं भुवनेश्वर में काम कर रहा था एक 5 स्टार होटल में। फॉर ए सिक्योरिटी रीज़न आई जस्ट डोंट वांट टू शेयर द नेम, बट हाँ, इट वाज ए 5 स्टार होटल। एंड जो वेयर आई एम गोइंग इज़ गोवा गाइज। मैं अभी गोवा जा रहा हूँ, ऑब्वियसली घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर माई वर्क, एक काम के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर। एंड आई डोंट नो जर्नी कैसा होगा, मुझे नहीं पता। न्यू पीपल, न्यू लोग, और बहुत सारे दोस्त बने थे, बट आई एम एलोन हियर टुडे। तो या मेरा ट्रेन आने वाला है गाइस। ट्रेन में बैठते हैं और बात करते हैं, राइट? आई एम लिटिल डिप्रेस्ड, नॉट डिप्रेस्ड, आई एम लिटिल इमोशनल, यू नो। छोड़ के जाना पड़ रहा है। वाटरफॉल इज देयर, वन दिख रहा था, चला गया। पानी दिखा? नो, ऐसे एक पहाड़ के अंदर दिखेगा ऐसे। ब्यूटीफुल मैन है ना, दिखने में अच्छा लगता है। सामने से ओह मैन, ब्यूटीफुल। दिख रहा? नहीं, बस सीन को बोल रहा हूँ। ये सेम सीन पूरा दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअल में दूधसागर नहीं दिखेगा, वो एंड में है या फिर चला गया। You guys are on a trip or what? No. I stay there. Okay. I stay in Margao. Those people, they are on trip, training. Definitely they can visit over here then. Yeah. Dudhsagar. My family member visited, so Okay. there is like this is which we are seeing or we gonna see, that is Dudhsagar railway track. Railway and track. another is Dudhsagar Falls, so people go there. वो नीचे है, नीचे, that is right. क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब नीचे है, नीचे एज इन के हिल कुछ नहीं है उसमें, नीचे
एकदम ऐसे रोड के नीचे ऐसा। అనమాటలుగా This one is this one, right? Yes, bro. Yeah. Oh. View is amazing, man. This one is a Dudhsagar Waterfall, right? देखा आपने? मेरे को लगता है ये एक्चुअली वाला है, क्योंकि यूट्यूब में ये देखा था मैंने। ये एक्चुअली है। एकदम वाइट। वो जो ब्रिज है ना वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर ब्रिज है। ब्रिज दिख रहा है। अभी जो आप लोगों ने वाटरफॉल देखा, दैट वन इज दूधसागर वाटरफॉल, राइट? सो फीलिंग रियली ब्लेस्ड टू सी दैट, मैन। द फीलिंग वाज डिफरेंट, राइट? मतलब आप नीचे वाटरफॉल जा रहा है और आप ट्रेन आपका ऊपर जा रहा है। सो डेफिनेटली उसको घूमने तो मैं पक्का आऊँगा, गोवा में हूँ तो अभी और एक स्टेशन है, ट्रेन इज़ 2 आवर्स लेट, 2 आवर्स लेट चल रहा है अभी। और लगता है अभी 2 बजे पहुंचने वाला था मेरा ट्रेन, अभी 4 बज गया, तो आई थिंक और आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। मैं मड़गांव में उतरूँगा। मड़गांव से उतरने के बाद उधर से मेरा जो जगह है 12 से 15 किलोमीटर और होगा, राइट? और वीडियो भी ज़्यादा मैंने बनाया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही मैं लो फील कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो मैं उसमें नहीं बनाया हूँ। तो चलते हैं, मिलके फिर आपको मैं उतर के बात करता हूँ फाइनली। तो एज यू कैन सी गाइस, जगह जगह पर वाटरफॉल वगैरह है। So finally I am reached at my hotel. It's around
13 kilometers from the station.